क्योंकि एक्चुअली एक एग्जीक्यूटिव है मेरा दोस्त है, वो एक्चुअली कल कराया था रायगढ़ में मना कर दिया, बोल रहे उनका ऑफिसर, इसलिए वो इमरजेंसी में बुर्ला जाना चाहता है कल मॉर्निंग में। अभी बुलाओ सेशन को, ठीक बोलिए। नहीं, खा लीजिए सब खा लीजिए, सब मेरा क्लास है अभी 9 to 10 नहीं आ पाऊंगा। हाँ okay. So another one main part of environmental health, that is ventilation. Yesterday we have discussed regarding what the noise. Last class we have discussed since 3 days back, and yesterday also we have seen the environmental and housing. Okay. Today we will start with this another one topic, that is ventilation and its concept. सुनाई दे रहे ना? आवाज आ रहा है मेरा? Okay. No. So let's start with the concept of ventilation. Ventilation is science of maintaining the atmospheric conditions which are comfortable and healthy. It controls the temperature, humidity, and purity of the air in the environment. So presently we are living in the environment. Wherever we are living, we are getting the air, but there is a ventilation. It is one of the methods where the science is maintained by the atmospheric condition which are comfortable and healthy. So because without ventilation there are two in ventilation, positive and negative ventilation होता है। जैसे कि हम लोग जब मैकेनिकली पेशेंट के ऊपर डालते हैं, that अलग होता है, that is ventilator. But in the environment it helps for the comfortably live in the society with the good conditions. ठीक है? It controls the temperature like ह्यूमिडिटी एंड प्यूरिटी ऑफ द एयर को क्या करता है, इसको वेंटिलेशन क्या करता है, एयर को इम्प्यूरिटी को प्यूरिटी कर देता है और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है, नॉर्मली रखता है और टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है. ओके, सो द अनदर that is what the another in the next slide. So objectives of ventilations, what are the objectives, which are what it helps, okay, to ensure supply of oxygen in the atmosphere. It supports or it ensure where the oxygen present, like oxygen इतना परसेंट है एयर में, नाइट्रोजन है, ओके, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड भी हैं, बट the pressure where are present, which are present in the air, the oxygen gas is present, carbon dioxide gas present, nitrogen gas present, that's ensured by the supply of oxygen in the atmosphere. It helps to stimulate the provide the oxygenation in the air. Okay, so to remove the toxic poisons present, whichever the present toxic is gas is there presently in the what air, either in the environment or the inner environment, like in the home or in the factory, like in the hospital, like in the any institute, like in the human being. So it removes the toxic poisons which are present in the environment or in the body. To remove the foul odors in the air, जैसे रूम में अगर इतना एयर भर जाता है इसमें, चाहे पॉइजनस गैस हो, चाहे वो फॉल स्मेलिंग गैस हो, व्हाटएवर, इट रिमूव्ड बाय द वेंटिलेशन. ठीक है, तो वेंटिलेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द person or for the environment to remove the impurity from the air. Okay, to remove the heat, excess moisture and to cool the surroundings. क्या करता है ये? कंप्लीट हीट को रिमूव कर देता है, excessive moisture रखता है, और to cool the surrounding, always it keeps the surrounding environment always in a cool, like to have to live properly. See, there are two types of methods of ventilations are there. That is one natural method of ventilation and the one artificial or mechanical ventilation. I will show one video on regarding the mechanical ventilation.
and natural ventilation. Interventilation and external, like in the internal ventilation with the room में, the external ventilation the environment में. Okay, जब हम लोग बाहर भी रहते हैं अंदर भी रहते हैं, तो so we are getting the what air, either it may be pure air हो या impure हो, but in the presence of air there are so many gases present, but this will ensure that will remove the impurities which are present in the environment, like external or internal. Like external mechanically बहुत सारे हम लोग घर में यूज करते हैं वेंटिलेशन को, like exhaust system, प्लेनियम सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम, एयर कंडीशनिंग. जो हम लोग घर में एसी वेसी लगाते हैं ना, तो ये मैकेनिकल वेंटिलेशन आता है. 4 टाइप से उसमें एग्जॉस्टिंग फैन लगाते हैं घर में, अगर क्लाउडी है पूरा तो अंदर का एयर को रिमूव करने के लिए हम लोग एग्जॉस्ट फैन यूज, प्लानम फैन यूज करते हैं, कंबाइंड सिस्टम यूज करते हैं और एयर कंडीशनिंग यूज करते हैं. इट हेल्प्स टू फॉर हैव द क्लियर द एनवायरनमेंट व्हिचएवर यार आइदर हीट है, जैसे कि गर्मी लगता है ना और एक रूम में, तो रूम का जितने भी गर्मी को रिमूव करके वो एरिया को क्या करता है, कूल करता है बाय द एयर, दैट इज एसी. Then natural ventilation में like we see the this slide, providing the sufficient inlet and outlet for the allowing the fresh air into a room or escape out of it. Like naturally जो आता है, जैसे खिड़की से जो आता है ना, जैसे हम लोग खिड़की लगा देते हैं, इसलिए हाउसिंग में जो पढ़ाया था मिनिमम 3 फुट से ऊपर होना चाहिए दीवार से लग के, मिनिमम 3 फुट से ऊपर होना चाहिए ऐसे विंडोज. Why? Because proper ventilation, proper sunlight will be delivered, will be exposed in the roof or in the home. Proper lighting, proper ventilation. So इसलिए वेरी मच इम्पोर्टेंट है, लाइक जो इंटरनल एनवायरमेंटल एयर को रिमूव करके नॉर्मल एयर लाइक बाहर का एयर लाके जो वेंटिलेशन से रिमूव कर सके, इधर से दूसरे जगह से पास हो जाता है ना एयर थ्रू द इन द रूम. ओके, it is has advantage of being a simple and least expensive, but has disadvantage that it cannot be controlled and depend upon the outside temperature, humidity, movement of the air. like देखो जैसे कि तूफान जैसा हवा आ गया तो क्या होता है, तो इतना बाहर का अंदर गंदगी जो डस्ट जो आ जाता है तो अंदर में घुस जाता है, इसलिए ये अनदर वन डिसएडवांटेज है नेचुरल वेंटिलेशन का. सो देयर वी हैव टू बी control depending upon the upside temperature, and it also depend on the what human nature, where he's constructed his house. Okay, next इंटरनल वेंटिलेशन. लाइक अगर एक्सटर्नल से हमने बात हुई, जो भी आ रहा है उसका पास होके चला गया, बट इंटरनल वेंटिलेशन में कैसा होता है, मिनिमम एरिया ऑफ द रूम शुड बी 3 मीटर्स इंटू 3 मीटर्स. तो इंटरनल वेंटिलेशन के लिए द मिनिमम एरिया जो दिया जाता है, जिसको रिकमेंडेड किया गया 3 मीटर्स इंटू 3 मीटर, इधर 3 मीटर इधर 3 मीटर. ओके, विड्थ एंड लेंथ. मिनिमम हाइट ऑफ द रूम शुड बी 3 मीटर्स. रूम का हाइट कितना होना चाहिए, 3 मीटर्स होना चाहिए. द टोटल एरिया ऑफ द डोर शुड डोर 7 विंडो शैल बी एटलीस्ट 1/4 ऑफ द फ्लोर एरिया. 1/4 of the floor area means like at least 1/4 of the area means 0.21% of उसमें क्या है, फ्लोर एरिया में ये होना चाहिए 7 विंडो. द क्रॉस वेंटिलेशन मस्ट बी इंश्योर्ड. देखो क्रॉस वेंटिलेशन भी देखना है, ताकि सामने अगर ग्लास है तो इधर भी विंडो है क्या देखना है, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन. several types of inlet and outlet ventilation should be provided. Like outlet inlet जो भी दिया जाता है in the home to be pass the air from one area to another area. इलेक्ट्रिक फैंस टू बी इंस्टॉल फॉर द मूवमेंट ऑफ द एयर. देखिए जैसे हम लोग लगाते हैं ना फैन, अगर घर में लगाते हैं इसलिए इंस्टॉल करते हैं ताकि जो मूवमेंट ऑफ द एयर विल बी हमेशा बरकरार रखे और इट विल बी रिमूव. ओके, इंस्टॉल्ड इन द एनवायरनमेंट. ठीक है. देन एक्सटर्नल वेंटिलेशन में indirect type of natural ventilation means ventilations around the house externally. Like जब हमारा हाउस के घर में जो अगल बगल भी होता है ना वेंटिलेशन, and it is the main part of the whole planning has to be considered by all local state governments. So कि हम लोग follow करते हैं according to norm that will give some measures that will be seen in the following measures. Okay, like constructing the wide street, वाइड स्ट्रीट को कंस्ट्रक्ट करना है, लाइक इन लोग एक जगह बनाना है. प्रोवाइडिंग द पार्क्स मोर ओपन स्पेस एंड प्लेग्राउंड्स को क्या करना, प्रोवाइड स्पेस देना है ताकि ये वो अच्छे से मूवमेंट कर सके. रिस्ट्रिक्टिंग द हाइट ऑफ द हाउसेस, जितना बिल्डिंग हाइट है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके. रेगुलर रिमूवल ऑफ द स्ट्रीट रिफ्यूज करना है, जो स्ट्रीट के जो रिफ्यूज होता है रिमूवल म्यूजियम रेगुलरली करना जरूरी है. जो वेस्ट गंदा पड़ता है ना वो आके घर में भी गिरने के चांसेस रहता है, रेफ्यूज. प्लांटिंग ट्रीज इन ओपन स्पेस अराउंड द बिल्डिंग्स एंड बोथ द साइड ऑफ द रोड्स. लाइक जैसे कि रोड के बगल में, बीच में, जस्ट राइट साइड लेफ्ट साइड में, एंड अराउंड द होम्स आल्सो. प्लांटिंग इज ट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द
proper ventilation and for the maintaining the air oxygenated in the air in the environment. So factories and offensive trades should be allowed away from the residential area. हम जो जाते हैं ना, जो भी offensive trades मैकेनिकल इंडस्ट्रीज हो, फैक्ट्री है, कोल्ड ट्रेन है, अदर बहुत सारे इंडस्ट्रीज होता है ना, लाइक कॉटन डस्ट का, सब उसको सिटी से दूर रखना है ताकि वो जो भी उससे रिमूव होता है ये गैस, दैट अनपॉइजनस गैस, तो ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट ना कर सके. ठीक है. Till that we have discussed natural ventilation. Now we are going to deal with this artificial or mechanical ventilation. Exhaust system. जैसे कि हमारा घर है, हर घर में एग्जॉस्टिंग फैन है. क्यों है? क्यों है वो हम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरनल जो गैस भर जाता है, जिसमें एटमॉस्फेरिक होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इंसाइड में, उसको रिमूव करके बाहर फेंक देता है. ओके. So installation of exhaust fans at the outlets near the ceilings or roof. टॉप में लगाते मालूम, आप जाके देखते होंगे रूफ में. So that the inside the pressure is lower than that of outside, and pressure is allowed to enter automatically to replace the inside. जो होता है ना inside जो pressure होता है, pressure ये lower होता है outside से. So इसलिए उसको क्या करता है, the fresh ये जो एग्जॉस्टिंग फैन क्या करता है, प्रेशर अलाउड टू एंटर ऑटोमेटिकली रिप्लेस द इनसाइड एयर, उसको एयर को रिप्लेस करता है इनसाइड में. such as in cinema halls, factory and kitchen of the eating house or restaurants. जहाँ आप जहाँ होटल में भी देखे होंगे, जहाँ फिल्म हॉल में भी देखे होंगे, इंडस्ट्रीज में भी देखे होंगे. ओके. आपके खुद के घर में भी किचन में हो सकता है वो आप रखे होंगे, बिकॉज जो ये जो है ना, ये जो इनसाइड जो प्रेशर होता है इज लोअर, कहाँ से, देन दैट ऑफ आउटसाइड से कम रहता है, इसलिए वहाँ पे हमको क्या लगेगा, डिफिकल्टी होता है ब्रीदिंग में, लेने में. तो प्रेशर इज अलाउड टू बी एंटर ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा. ओके. Then plenum, another one system है that is used by prepared by the manually. Propulsion fans are used to be throw pressure air from outside in the hall. ये टाइप का ये फैन है that will use to throw the pressure from outside से अंदर लेके आता है यार. These are used mainly in the factories, may be carried by the ducts. Plenum systematically be either upward or downward, like उसको डाउनवर्ड अपवर्ड मूवमेंट में आपको दिखा दूंगा, मैं आपको एक इमेजिनेशन दिखाऊंगा. प्लेनम सिस्टम कैसे होता है इन द फैक्ट्री में. अपवर्ड टाइप, द एयर इज थ्रोन फ्रॉम द फ्लोर लेवल एंड वेंटिलेटेड एयर इज अलाउड टू एस्केप थ्रू द वेंट्स प्रोवाइड द सीलिंग लेवल. तो क्या करता है, जब प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर इसको बाहर करके इसमें डाल देता है. ओके. डाउनवर्ड टाइप, the air is forced in the room from the ceiling. Downward से क्या होता है, एयर फोर्स से भी इन रूम आता है और सीलिंग जरिए. लेवल एंड वेंटिलेटर, level and via vitiated air is allowed to be escaped through the vents provided at the floor level or slightly above it. This rather unnatural since the cold air is introduced at the higher level against the laws of nature. देखो ये सब करने से मैं आपको ये वीडियो अभी दिखाई दूंगा, देख लो प्लेनम कैसे होता है, तब जाके आपको आइडिया भी आ जाएगा. ठीक है, देख लो ये वीडियो, आप देखने से आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा. तो ये सीलिंग में ऊपर कैसे वो लगाते हैं, देख लो प्लेनम फैन. Hi everyone. Today we're going to talk a little bit about ceiling plenum boxes. They are widely used throughout the industry. They are becoming the norm in kitchen ventilation design. What happens with a ceiling plenum box is that they help ensure lineal, or the length of the hood, even air distribution. And they help ensure that there's no ये जो देख रहे हैं ना सीलिंग में,
ये वहाँ से डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, वहाँ से ऊपर से नीचे A आता ceiling है. planet box is what you're seeing up above here. These are perforated screens. There's a second perforated box inside this that distributes the air evenly throughout the length of the planet box. The planet box itself can be mounted directly to the edge of the hood, normally 24 to 18 inches above the lower edge of the hood. The ceiling planet box is designed so that you can bring in air that is not cooled into the space and maintain the shield to hold all the smoke into the hood system. If I stand under a ceiling planet box, I can feel whatever the temperature is outside coming down. Okay? If it's in the winter, of course, we have heating units, because you can't have somebody freeze underneath the box. If we're minus 40 outside, we don't want minus 40 in the kitchen. But at the same time, because cooling costs so much to operate and to acquire, we don't want to necessarily cool the makeup air. To put that into perspective, it costs $1 a CFM on average to heat makeup air. It costs $2 a CFM on average to cool. And for every 200 CFM, we need 1 ton of air conditioning. So if I have a 10-foot hood and it is originally set up at 3,000 CFM, that's 60 tons of coolant that I want in there. If I have the hood set up that I can reduce the air 30%, and I'm going to bring in just raw air heated only, I don't have any cooling at all. But at the same time, I don't want that if it's 100 degrees outside in the summer, I don't want to heat the rest of the kitchen up. So this air curtain comes down only within the 18 to 24 inches in front of the hood and blows into the hood area. If I stand directly under the grill, I can feel that air, the temperature of it. I don't feel the traps, but I feel the temperature. If I take one step over, away from the edge of the grill, I feel the kitchen space temperature. So what's becoming a norm in the industry is having ceiling planet boxes in front of all of our hoods. And in large island applications, we may even be all around 4 sides of the hood. So that we ensure that we reduce the air 30%, we ensure that we do not heat the kitchen, and we ensure that we have an even capture and containment for the whole hood system. Thank you. ओके, ये जो प्लेनम स्पेस होता है ना, और थोड़ा एक तो A plenum space is a part of a building that can facilitate air circulation for heating and air conditioning systems डेड नॉन by सर्कुलेटिंग providing स्पेस, फोर्स्ड pathways एयर for रिटर्न, either heated रूफ सीलिंग conditioned or होता है ऊपर return में, air लिविंग flows, वर्किंग स्पेस हम लोग usually रहते at हैं इधर पे, greater than atmospheric फोर्स एयर pressure. सप्लाई. देखो यहाँ से Space चलते रहता है between उसका the एयर, structural तो floor जितना and the चाहिए drop उतना हमको ceiling मिलता or under a रहेगा. raised floor is typically considered plenum. However, some drop ceiling designs create a tight seal that does not allow for airflow and therefore may not be considered a plenum air handling space. Purpose: the cavity plenum space is typically used to house the communication cables for the building's computer and telephone network. However, it has been proposed that the growing abandonment of cable in plenum spaces may pose a serious hazard in the event of a fire, as once the fire reaches the plenum space, the airflow present in the space supplies fresh oxygen to the flame and makes it grow much stronger than it would have otherwise been. Recent testing by ASHRA has shown that, while flame spread is limited by accumulated cable bundles, other structural concerns may still exist due to increased load on suspended components. As plenum spaces are restricted from use as areas for storage, the principle behind removal of abandoned cable is that regulated removal prevents the use of plenum spaces as a storage area for abandoned cable. In addition, no high-voltage powered equipment is allowed in the plenum space because presence of fresh air can greatly increase danger of rapid flame spreading should the equipment catch on fire. Diligence is required to make sure that a non-plenum airspace stays that way. A non-plenum airspace can become a plenum airspace by accident if the ductwork is disconnected and not properly repaired and resealed. Ductwork disconnection can occur due to building damage such as earthquakes, aging,
or adverse environment causing the metal So to this corrode area and is fall supplied apart, air or forcefully simply into the for negligence on the worker part where of building living, contractors but this that will leave forcefully work return to the unfinished. another In gets all such different ceilings cases, discovery removed. and repair of such problems to eliminate unintended plenums is difficult due to the hidden nature, limited space, and difficult access of most installed drop ceilings. For highest fire safety, it is best to assume all drop ceiling airspaces are plenum. Okay. Next, it marks plenum system combined and balanced system. Another one type of a mechanical system. Air is forced the floor level and via airted air is extracted through the openings near ceiling by exhaust fans. जहाँ पे होता है ना सीलिंग पर वहाँ just near क्या होता है exhausting ceiling होता है इसलिए होता है combined balance system. Okay, the exhaust air of the smaller capacity than plenum so that the greater volume of the outside air is pumped into the room. देखो यहाँ तो greater volume of air क्या होता है pump करके internally दे देते हैं. दिस सिस्टम इज मोर इफेक्टिव बट आल्सो मोर कॉस्टली क्योंकि ये सब कंबाइंड होता है ना इसलिए कॉस्टली होता है इसलिए इसको यूज करना बहुत है. एसी तो आपको जानते हो एयर कंडीशनरिंग द एयर कंडीशनिंग रिगार्डिंग द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी द डस्ट इज आल्सो फिल्टर्ड. इसमें क्या होता है डस्ट भी फिल्टर होता है जो प्रेजेंस होता है इंटरनल एनवायरनमेंट में द होम और इन द एनीवेयर लाइक हॉस्पिटल हो या इन द इंडस्ट्रीज हो या एनीवेयर. ओके द ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके टेम्परेचर को क्या करता है कम करता है. ओके द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड कूलिंग और हीटिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू दैट दैट यू हैव टू एडजस्ट द टेम्परेचर कम होना करना हाई करना कम करना और कूलिंग एज करना कम करना. ओके the humidity is increased or decreased by the adding the moisture or cooling उसमें remove the water. यहाँ पे क्या होता है स्पेशली ह्यूमिडिटी में जैसे हम इंक्रीज कर लेते हैं वहाँ पे और इंक्रीज डिक्रीज करने से मॉइस्चर ऐड कर हो जाता है बट कूलिंग भी होता है एंड रिमूव द वाटर ऑटोमेटिकली वाटर द डिफरेंस बिट ऑफ 10 to 15 डिग्री इज मेंटेन फॉर कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर होता है बोलते हैं theoretically 10 to 15%. द नॉर्मल टेम्परेचर बोलता है हमारा 25%. ठीक है कंफर्टेबल atmospheric if the temperature is 75 degree like अभी see comfortable atmosphere if the temperature is 75 degree relative humidity is 70 there is a no dust there is a movement of air of the room at least 10 times per hour 10 times per hour से क्या होता है वेंटिलेशन मूवमेंट होते रहता है. ठीक है वेरी सिंपल है वेंटिलेशन ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है बट एक्शन ऑफ विंड क्या है हम देख लेंगे. The wind effect affects the ventilation. The two different ways है directly by the percolation. Direct flow of the air is called percolation बोलते हैं. Indirectly by aspiration. The sucked air in the form of outside indirectly due to lower pressure in the room. तो sucked करते हैं और क्या करते हैं एक फ्लोर एयर को क्या करते हैं डायरेक्ट फ्लो एयर इसका डायरेक्ट फ्लो एयर डायरेक्टली इसको बोलते हैं परकुलेशन बोलते हैं और इनडायरेक्टली उसको एयर को क्या करते हैं सक करते हैं फ्रॉम द आउटसाइड इट इज इनडायरेक्टली एस्पिरेशन बोलते हैं. ठीक है ये देखो इनलेट ऑफ एयर पॉजिटिव प्रेशर एस्पिरेशन प्लान लो प्रेशर होता है यहाँ पे ब्लैंकेट एंड आउटलेट. दिस इज द मेथड ऑफ हाउ द एयर इज एक्शन इनलेट एंड आउटलेट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्जॉस्ट ऑन इन inside aspirating and outlets. ठीक है this is one method of ventilation. We'll see the another one in picture नहीं आपको एक images दिखा दूंगा. So वो क्या है देख लेते plenum and combined air. जैसे कि ये देख लो ये एक बिल्डिंग होता है जैसे एक फैक्ट्री का बात कर जैसे कि ये देखो सेकेंडरी ड्रेन प्लान सप्लाई ऑफ द प्लेनम एयर यहाँ पे इनलेट आउटलेट देखो ये सब बिल्डिंग वेरियस टाइप के बिल्डिंग्स हैं. इन इंडिया में अगर देखा जाए
ये किचन में और बड़े बड़े हॉस्पिटल में, बड़े बड़े फैक्ट्री में क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल किया जाता है। ओके, किस तरीके से प्लेनम वेंटिलेशन देखो आप। एयर कंडीशनिंग तो आप तो जानते हैं। तो ये नहीं है, बस जस्ट आप इमेजिन देखिए, इमेजिनेशन प्लेनम। ओके, ये देखो लार्जर शीट मेटल से प्लेनम ईयर बॉक्स होता है। ओके, फैक्ट्री में वगैरह लगता है प्लेनम फैंस इन इंडिया। देखो ऐसे फैंस होता है सीलिंग के जरिए, और डाउनवर्ड में अपवर्ड में, और ग्राउंड में हो सकता है, अपर में, डिपेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में जैसे करते हैं उसके हिसाब से वो लोग। देखो मैन्युफैक्चरिंग द चेन्नई तमिलनाडु में है, देखो ऐसा वाला प्लानम वेंटिलेशन लगाया होता है। ओके, ये जो यहाँ से कम्प्लीटली एयर इंसर्ट करते हैं, जितना प्रेशर सेंसर आता है उतना उसको लिविंग रूम में देके बाकी उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं। So this is all about what ventilation. Okay. Tomorrow will going to we are how the further class, that is what. So शायद I think so lightning अंदर वन लास्ट क्लास है लाइट। ओके, ये देखो ये फैन है, ये सीलिंग फैन का। ओके, ये प्लेनम फैंस बेस्ट प्राइस प्लेनम फैंस है। ये देख लो प्लेनम फैन, कैसे एयर होता है, इनलेट होता है एयर। ओके, इनलेट जो एयर लेयर है ना, ये वाला देखो। ठीक है, ऐसे उसका बॉक्सेस रहता है, इनलेट एयर एंड एग्जॉस्ट, प्लेनम बॉक्स सप्लाई द एयर डिफ्यूजन करता है, देख लो। सो हाउ द एयर इज इन द लिविंग रूम, द मोस्ट हाई फैक्ट्री में क्या होता है, इनसाइड वेंटिलेशन ही नहीं रहता ना, उस टाइम क्या करता है, जरूरी है ताकि ये लिविंग पर्सन को प्रॉपर एयर मिल सके। प्रेजेंस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन मिलने के लिए ये वेंटिलेशन जरूरी है। ओके, इसलिए उसको ह्यूमन मेड वेंटिलेटर बोलते हैं। It will be for the purpose of to use the normal air in the presence of toxic gas. Okay, जो गैस होता है उसको कंप्लीट रिमूव करके जो नॉर्मल एयर दे देता है। ओके, इन द या ओके, और क्या देखोगे, सी द डिफरेंट डिफरेंट है वो मेथड होता है। देखो हीटिंग वेंटिलेशन से जो होता है, ठीक है, सो मेनी मेथड्स आर देयर इन द वेंटिलेशन। सो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो along with this we are going to complete what the, और आपको क्या बताना है तो देख लें। Cram. Welcome to another MedCram lecture. We're going to talk about mechanical ventilation. And this is later. That's important to know. मैकेनिकल वेंटिलेशन ये वेंटिलेटर है, नॉट अ वेंटिलेशन। ये आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, हम लोग जब आएगा हम लोग सेकेंड ईयर में देख लेंगे। ठीक है, ठीक, ओके, बाकी क्लास हम कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है।